Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Welcome to Crack Grade B. Please let me know if आप लोग मुझे properly सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो. All good? All clear? Thank you so much. So we will be continuing with more questions जो कि हमारे पैराजम्बल के थे. Let me give you a quick recap of what we did yesterday, the rules and the strategy. So rules तो क्या strategy ही है. तो उससे पहले if you are new here, subscribe the channel, like और share कर दो फटाफट and continue attending the classes here क्योंकि बहुत सारी useful classes आपको यहाँ पे beneficial classes आपको यहाँ पे मिलेंगी. So talking about parajumble, we learned कि हमको एक approach होती है inverted pyramid, वो help करेगी. Where you have this general information जो हम पहले देते हैं and then we narrow down and give more details. Another thing is to check for the logical flow. Logical flow is, let's say there is a research going on and then the findings and the results of course हम later on ही बताएंगे है ना. Then we have to mark keywords in our mind, this, these, those, also, for example conjunction, some adverbs, the with a common noun, ये help करेंगे connect करने में previous point से. So what do we do is we pair. हम छोटा पेयर पहले बनाते हैं 2 या 3 सेंटेंस के and then we connect those pairs with another sentence or another pair और फिर final answer हमें मिलता है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. as we do the questions हम और जो है you are enrolled student, how to connect with you regarding any doubt. You have enrolled in which course, AJ? Which is the CSIR course you're talking about? You can connect over Telegram or you can maybe mail us. Mail would RBI Grade B1. Okay. Please mail. Okay, you can mail your concern to the team, and I can definitely then take a hit from them. Okay, so yes, these are the things जो आपको follow करनी होती. Let me place timer for you. That's your first question. You have to arrange all the sentences. Hello, good afternoon. Start doing the question, Parajumble ka.
कुछ सही डायरेक्शन में है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है? ओके, जिनका हो गया वो चेक करेंगे. आई एम गोना गिव 30 seconds more and then I'll take this question. ओके, चलो कीवर्ड्स मार्क करते हैं बिफोर रिवीलिंग द आंसर. सम पीपल बिलीव दैट एट प्रेजेंट इट्स इम्पोर्टेंस इज डिक्रीजिंग. एक किसी चीज के लिए इट्स बोला है, दैट मीन्स किसी के इम्पोर्टेंस के बारे में बोला होगा. एंड नाउ एट प्रेजेंट इट इज डिक्रीजिंग. द एक्सटेंट ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, फिर से इट्स है तो ये इट्स का नाउन चाहिए. May be slightly less in cities as compared to rural communities. Some even go to the extreme and say, even go to the extreme and say. तो even मतलब है कि पहले some people might be saying something and now it's growing more in intensity. It will soon become obsolete. देखो, decreasing, it's a general statement, and becoming obsolete, no more there in existence, is extremity. तो इस वजह से एक पेयर जो हमें मिल रहा है वो है ए का और सी का. ओके, दिस इज वन पेयर दैट वी आर गेटिंग. कि इवन बोला है. द फैमिली इज एन इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंसी बोथ इन रूरल एंड सिटी कम्युनिटी. So this is of course the beginning, because we are giving the definition of something and we are considering something in a way. तो फैमिली क्या है? फैमिली इज समथिंग, वो हमें यहाँ पे मिल गया है. द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस डज नॉट मैटर मच एंड देयरफॉर हैज नो सिग्निफिकेंस. सोचते हैं कहाँ लगाएंगे. देयर आर अदर्स who believe that the family has survived such storms, जो कि डिक्रीज हो रहे हैं, ऑब्सोलीट हो रहे हैं, these changes. these भी आपके पास एक क्लू है यहाँ पर. चेंजेस है यहाँ पे, रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस. सो दीज चेंजेस के कारण भी ये ए और सी पेयर है इन द पास्ट एंड इट विल डू सो इन द फ्यूचर ऑल्सो. देखो, फ्यूचरिस्टिक बात है, समथिंग जो कि आगे भी चलेगा. अ होप इज गिवन, so definitely F is going to be at the end. Okay, so you have F जो लास्ट है, AC एक पेयर है, D आपके पास में फर्स्ट सेंटेंस है. Now let's take B. The extent of its importance may be slightly less in cities. तो ये जो है फैमिली के इम्पोर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंसी को जो बोला गया है उसके बारे में है. द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट डज नॉट मैटर. देखो, स्लाइटली डिफरेंट है, लेस है, कंपैरिजन है, तभी तो डिफरेंस पाया गया है, द डिफरेंस बोला है. So we have D, B and E, and then we are saying, taking it further, कि कुछ लोगों का तो कहना है डिक्रीज हो रही है, कुछ का कहना है कि ऑब्सोलीटी हो जाएगी. And then there is a hope. There are other people who are saying no, it can survive. So this is how your progression is, and the answer is D, B, E, A, C, F. Okay, D, B, E, A, C, F. Any doubt? आई होप अभी समझ में आ गया होगा. जो स्पेशल यहाँ पे आपको ध्यान देना था स्पेशल तरीके से, वो था इवन, these changes, its importance, obsolete and decreasing, है ना. Also the difference, like what.
You need to solve the question. It's okay. There can be no arrangement required. वो होता है एक तरीके का आंसर. But have you checked this the answer for this question? Wow. Thank you so much for sharing that with me. And I'm so glad to know this, where you have reached. All the best. आगे भी और progress करते रहो. Thank you so much for sharing. Okay, so the answer is A, E, C, D, B, G, F. The COVID-19 lockdown has affected the government in a number of ways. A number of ways is general. एंड यहाँ पे लॉकडाउन के बाद में लॉकडाउन का नाम है एंड देन लेटर ऑन वी से द लॉकडाउन है ना. वी आर सेइंग अदर डिटेल्स लॉकडाउन रिलेटेड. सो ऑफ कोर्स ए जो है वो पहला हमारा सेंटेंस होगा. अभी आगे देखते हैं. द लॉकडाउन हैज ऑल्सो मेंट लेस ट्रेवल बाय रोड. मतलब इसके पहले लॉकडाउन might have done something. We have explained that thing, and now we are talking about one more thing using the word also. Globally, air travel accounts for 12% of the transport sector's greenhouse emissions. Okay, so now this is just a fact, so we'll keep it on hold. Usko hold पर रखते हैं. An ongoing reduction in air travel would lead to lower greenhouse gas emissions. Of course, C and D एक पेयर है. Why C and D are a pair? क्योंकि दोनों में वो ग्रीन हाउस एमिशंस को लेकर बात हो रही है. फर्स्ट वी आर गिविंग द डेटा 12% and ongoing reduction in this 12% would lead to lower emissions. Reduction in travel would lead to lower than 12% of the emissions. ये वाली बात हो रही है. The first is a reduction in air travel. So of course E जो है वो पहले आएगा, है ना. और वो एयर ट्रेवल से ही रिलेटेड C और D की भी बात हो रही है. सो E, C, D ये सब साथ में आ जाएगा एयर ट्रेवल रिलेटेड. F बोलता है the long term impact of pandemic on climate change depends on the actions governments take as economies recover, as they will influence the path of global CO2 emissions for decades. It has this tone of conclusion. It will influence the path. आने वाले समय में futuristic tone. So this is going to be your last one. Okay, अभी तो पूरे spread है. अभी हमने सबको साथ में नहीं लेकर आए हैं. Worldwide
daily emissions of carbon dioxide had dropped significantly, and just under half came from changes in land transport. Land transport by road, मतलब B और G साथ में आएगा. अभी B में also है, so first air वाली पूरी बात कर लेंगे, and then we will say B and G, because now we are talking about another mode of transportation, that is by road या फिर by land, है ना. तो यहाँ पे ये चीज आपके पास में अब आंसर लेकर आ जाएगी. स्टार्ट विथ ए. ECD में फर्स्ट यू टॉक अबाउट एयर ट्रेवल, पूरी कंप्लीट बात. देन द सेकेंड स्टेप, द सेकेंड वन इज ट्रैवल बाय रोड, BNG पूरी उसकी बात कर रहे हैं. एंड देन फाइनली F में वी आर सेइंग दैट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है. सो योर आंसर इज दिस. Okay, I hope there is no other doubt. So when I'm excuse me, explaining you how it is done or how I did it, I really want you to learn from those things which you have missed. Maybe आपने also नहीं देखा, maybe आप ये नहीं समझ पाए कि land transport and by road, it's the same topic we are talking about, so they will come together. So you try to pinpoint those points where you missed out, and then from the next question onwards it will become easier for you. Okay, let's move on to the next question now. Like और share ज़रूर कर दीजिए आप लोग. एंड मोस्ट प्रॉबेबली फरवरी में मेरी क्लासेस यूट्यूब पे ही हैं, कंटिन्यू हो रही हैं. एंड फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स दे विल बी मूव्ड टू द प्लेटफॉर्म. वहाँ की क्लासेस में फिर होंगी. चेक कर लो. किसी को ये नहीं लगा कि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है?
or because of the year you thought it should start with R? It requires no arrangement. Oily orange coffee rust is a fungus that grows on coffee crops in splotches. Left alone, it causes crops' leaves to fall off, reducing its caffeinated yield and killing the plant within the ears. So, coffee rust क्या होता है and क्या करता है? In P and Q, you are getting two things, and it is both of the things are about what this fungus does. अभी बोल रहे हैं RST में ecologist conducting field work in Puerto Rico made a groundbreaking discovery. Okay, ठीक है, R में कुछ discovery हो रही है. They found snails that seem to be munching on the coffee rust. The coffee rust. Orange coffee rust. अब R के साथ तो S लगाना ही है हमें because they मतलब ecologist हैं. The snails were eating the infectious fungus. द फंगस बोल रहे हैं मतलब कि इस फंगस को मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा होगा. When I am saying the infectious fungus, that means this fungus is already named earlier, but not the plants, which was a surprising find since scientists had only observed herbivorous, not fungivorous, Asian tramp snails until now. तो RST का एक पेयर है where there is a finding, PQ that describes that fungus. And since in RST we are saying the fungus, PQ को पहले लिखना ज़रूरी है. Fungus has to be introduced before because in RST we are referring to that orange coffee rust. That's the name of the fungus. So that's why PQ will come first and then RST will come. लगा था? इसमें थोड़ा सा गट से जाना चाहिए था ना. हियर एट दिस पॉइंट आई थिंक अगर आपने ऑब्जर्व करा होता द फंगस एंड द कॉफी रस्ट, सी यू आर गेटिंग अ कंप्लीट नेम ओवर हियर एंड हियर इट्स ओनली कॉफी रस्ट. देयर वर दीज टू हिंट्स, देयर वाज दिस वे यू कुड हैव थॉट एंड उसमें फिर आप गड़बड़ी नहीं करते. अदरवाइज आई थिंक पेयर तो आपने बना लिया होगा, पी क्यू टुगेदर, आर एस टी विल कम टुगेदर. At least this much you might have done correctly. That's what I feel. Okay, Nishant Ranjan, let me explain that to you once you have completed this question and the other students as well, ताकि अभी बीच में disturbance नहीं होगा किसी के लिए भी.
How many of you are sure of your answer? Like feeling very confident. क्यू एस आर तक तो कोई नहीं पहुंचा है. पीटी. अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल अब वेरी बिग हिंट दैट फर्स्ट कुछ बोलोगे उसी का एग्जाम्पल लेटर ऑन दोगे. In maths, kids can stretch their arms diagonally to represent whatever. Okay. Theories of cognition hold that we learn through physical actions in our environment. So Q, of course, is the first one which you have done correctly. मतलब कुछ नहीं तो एग्जाम में फर्स्ट वाला तो सही मार्क करके आओगे. But for this to occur, the student's actions must correspond to learning concept. What is a contrast introducing word? तो पहले सब पॉजिटिव बोल दो या रिलेटेड बातें बोल दो और फिर जो भी कॉन्ट्रास्ट आ रहा है और आगे बढ़ रहा है हम उसको बोलेंगे. तो आर में ट्रांजिशन होगा. सो टॉक्स अबाउट द रिजल्ट. सो एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प स्टूडेंट्स बेटर. अभी हमने क्यों में बोला थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन बोलते हैं फिजिकल एक्शंस जो हैं वी कैन लर्न थ्रू दैट. That is why. So, therefore, engaging in physical activity can help. So, Q and S positive note पे है talking about how physical activities are going to help. In groups, they can link arms to form a triangle. अभी arms वाली बात कहाँ हो रही थी? P में हो रही थी. तो P और T साथ में आएंगे, right? And it says in R, this to occur, students' action must correspond to learning concept. लर्निंग कंसेप्ट क्या हुआ y इक्वल्स टू एक्स ये जो डायगनली आर्म्स अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्रोकोडाइल आर्म्स कैन शो एक्यूट एंगल्स. लर्निंग भी है और एक्टिविटी भी है. तो टी टी जो है उसके पहले ऑफ कोर्स आई हैव टू से आर एंड देन द ट्रांजिशन गोज टू की हाउ वी आर कनेक्टिंग कंसेप्ट विथ एन एक्शन. तो यहाँ पे आपका आंसर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है. कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में. तो अंडरस्टैंडिंग नो. Q and S, first you complete talking about one idea, one thought, then you move to the next thought. तो इधर पे वही हो रहा है कि Q और S में you simply told how physical activity can help with concepts and learning. R में you are talking about for something that is a requirement and P और T में आप उसका example दे रहे हो. There was this question related to the previous question कि आर से शुरू क्यों नहीं हो सकता. तो जस्ट एज आई मेंशन्ड अर्लियर पी क्यू एक पेयर है और आर एस टी एक ट्रायो था आपके पास में. तो इफ यू स्टार्टिंग विथ आर देन ये पूरे को साथ में रखना पड़ेगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ओके. बट इन एस वी आर सेइंग द रस्ट. इन टी वी आर सेइंग द फंगस. तो इन तीनों को ब्रेक तो कर नहीं सकते थे. तो अगर मैं पहले ये बोल दूँ एंड देन पी क्यू बोलूँ देन व्हाट इज दिस फंगस. फंगस का नाम तो हमें पहले मिल रहा है पी में. तो दैट्स व्हाई आर कुड नॉट बी द फर्स्ट वन. आर एस टी एज अ होल लेकर चलो उसको. आर अकेला नहीं है वो. अगर आर पहला हुआ तो एस टी सेकेंड थर्ड हो जाएंगे ना. एंड देन यू वोंट बी एबल टू नो विच फंगस वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे अब आपको दो काम करने हैं. यू हैव टू मार्क द ऑड वन आउट एंड अरेंज रेस्ट ऑफ देम. तो आप मुझे आंसर ऐसे ही दोगे. लेट्स से यू फील और यू फाइंड इट आउट कि ए ऑड है. तो बी सी डी ई को अरेंज करो और वो मुझे आंसर दो ऑड वाला एंड रिमेनिंग फोर का अरेंजमेंट.
A, B, C. How is this? Uh, okay, why is D odd? देखो, the 1% annual pace of expansion for the year compared with this growth in 2015 doesn't make sense. कहाँ आएगा? Hold on. For all but one quarter of the year, private demand was flat or negative. It was almost flat. Okay, so this is a data kind of information for us. Japan's economy expanded at a slow pace, steadily slowing pace, slow होती हुई pace. So definitely now we understand किस चीज़ के pace की, किसके percentage की बात कर रहे हैं, कहाँ का percentage. And quarterly growth and helps us to connect the similar ideas and same tones. So and quarterly growth slowed to 0.2%. में क्या बोला? It was flat or negative. एंड क्वार्टरली ग्रोथ तो स्लो भी हो गया डाउन फ्रॉम दिस मच. तो आपके पास में बी एंड डी पेयर थे. ए में बोल रहा है 1.0 एनुअल पेस कंपेयर्ड विथ इतना इन 2015. तो दिस इज ए जो यहाँ आएगा. द यूजुअल बूस्ट from increased government spending at the beginning will likely sustain growth. सब कुछ तो नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे, growth slow हो रही है. Your other sentences A, B, C, D, it's talking about private demand was flat, expansion जो है वो कम हो गया और sluggish spending हो रही है, ग्रोथ स्लो हो रही है. ई तो आपको पॉजिटिव दे रहा है जो यहाँ पर एज ऑफ नाउ मैं कहाँ फिट करूँगी. अगर एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है सो आई नीड अ कंजंक्शन फ्रॉम दैट फैमिली टू हेल्प मी एड इट. बट होता, हाउएवर होता, येट होता, है ना, या फिर वाइल होता, कुछ होता मेरे पास में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से. बट आई एम नॉट गेटिंग एनी. तो ई इज द ऑड वन आउट. वो तो क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पर. इट्स पॉजिटिव. ऐसे करना है. देखो ऑड वन आउट के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है. इट कुड बी लाइक यू हैव 4 sentences positive 1 negative, 4 negatives 1 positive. 4 sentences they talk about the origin of something and there is one sentence that talks about future um, growth of something. So that first the last one, the future one is odd one out. Then you have 4 sentences they talk about impact of something and one sentence is talking about the cause of that thing. तो पहले आप चारों impact को बोलोगे cause, उस केस में odd one out हो जाएगा. You have to check and compare sentences with each other in such a question. You can do one thing which will help you. I think जो ये अभी मैं बताऊंगी वो आपको ज़्यादा help करेगा. You try to arrange 4 of them. Don't start searching for the odd one out immediately. आप automatically arrange कर दो. So like we arrange C A B D and E अपने आप बाहर हो गया उस केस में. So most of the times you will try to arrange the correct sequence and while doing that automatically there will be one sentence जो odd आपको समझ में आ जाएगा.
Very good. Those who confidently answered it is A, B, C, D. The new DPP is a step in the right direction. Now here is a catch I'm going to talk about, okay? क्योंकि आप यहाँ पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन माइंड में लेकर आ सकते हो कि डीपीपी का फुल फॉर्म कहाँ है, पर है ही नहीं। डीआरडीओ का है। सिर्फ डीआरडीओ का है तो वो आपको अगली बार कहीं डीआरडीओ होता तो हेल्प करता, पर डीपीपी का नहीं है ना? Also we see that it is a step in the right direction as it encourages private companies to conduct business in the defense space. We are particularly encouraged by the issue related to this situation, single vendor, which will now be accepted under certain conditions. तो ये जो है ऑथर या राइटर के जो जो तरफ से आ रहा है डायरेक्टली वैसे ही लिखा गया है। सेकेंडली डेफिनेटली बाद में आएगा, इट enables DRDO to choose partners. डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। सी द टोन इज what kind of a tone? We are trying something new. Diversification. So encourages private companies to do business. That's why issue related to single vendor will be solved, and then there will be this opportunity to choose partners. Apart from the industry, the new DPP will benefit end user as well. So everything is with respect to this new DPP and what it is doing, how it is helping, everything positive. He says while the initial order is of 300 3,192 unit, we see a huge potential given over 35,000 gypsies are due. But एक तो ड्यू की बात हो नहीं रही है। ऑर्डर द इनिशियल ऑर्डर, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्डर। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप, दिस न्यू डीपीपी, एंड उसी को लेकर वी आर एक्सप्लेनिंग हाउ दिस डीपीपी इज हेल्पिंग अदर कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, एंड उसी के बारे में सब कुछ है। तो विदाउट अ डाउट यहाँ ई जो था वो ऑड था। ई के फिगर्स, ई में जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज द इनिशियल ऑर्डर, एंड वी सी अ ह्यूज पोटेंशियल, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जिप्सीज एंड ऑल क्या है, कैसे हैं। सो दैट्स द रीजन ई इज द ऑड वन आउट। Arrangement also.
ध्यान से थोड़ा। ओके, नो मोर फ्रैगमेंटेशन of responsibility across such agencies, no more election focused short termism, no more neglect of the commons within the city. Okay, so it is context में no more है. This is like a storytelling where you have phrases as sentences sometimes. अब ये नहीं है, ये भी नहीं है. You know, it's not exactly कि आपके पास में एक subject है, verb object है. A proprietary city is a community created, this is the definition, and provisioned by a private developer under an arrangement. This overlapping social web is an important crucible for new days. Social web के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है ना? This is gone. The second, proprietary cities tests the lengths people are willing to go for more orderly cities. ठीक है, तो ये जो है ये है द सेकेंड. प्रोपेरिटी सिटीज जो है वो है द सेकेंड, उसी के लिए कॉमा लगाकर उसको नाम बोला है ना. एंड दिस टेस्ट द लेंस ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू गो. इट इज एसेंशियली अ मेगा लैंड एक्विजिशन justified by the idea that the private developer, प्राइवेट डेवलपर जो कि बी में बोला है और ई में बोला है द प्राइवेट डेवलपर. तो यहाँ पर आप थोड़े से जो है द सेकेंड की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए. आंसर इसका है DBEA. लेट मी टेल यू वाई. ओके, तो बी और ई जो है वो पेयर है. क्यों? क्योंकि इसमें डेवलपर क्या कर रहा है वो बताया जा रहा है. ओके, नाउ ये जो द सेकेंड बोला है, इस सेकंड की जो नाम है, डेफिनेशन है, वो यहाँ कॉमास के बीच में बोला गया है. इन्वर्टेड कॉमास के बीच में भी नाम ऑलरेडी है. दिस शोज कि ये द सेकंड का कुछ रिस्पेक्टिव द फर्स्ट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है मुझे. So there is nothing that can stop D from becoming the first sentence. तो यहाँ पर you are introducing the term and then you are defining the term in B. Can you understand this point? यहाँ D में क्या हो रहा है ना, we are simply saying there is a second something, the second, and जो term है inverted commas में proprietary cities, ये टेस्ट करती है लेंस ऑफ पीपल कि क्या क्या कर सकते हैं वो. देन हम उस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं दैट अ सिटी इज सो एंड सो. फिर वो प्राइवेट डेवलपर वाली बात को आगे बढ़ा रहे हैं ई में. एंड देन वी आर सेइंग दैट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर अ मेगा लैंड एक्विजिशन, no more fragmentation, no more neglect, no more election focused short termism. तो इस वजह से ए जो है वो कंक्लूसिव टोन में आता है. एंड योर आंसर इज दिस. I hope now it is clear. I'll repeat this thing for you people because I know कि आप लोगों ने D को अगर reject किया है to be the first one, it is just because of the word second. So first of all, whenever you have any such word, first, second, third, you see कि अगर थर्ड है मान लो या सेकेंड है तो क्या फर्स्ट था यहाँ पे? नहीं था हमारे पास. द फर्स्ट इज समथिंग समथिंग, नो. सेकेंडली, इसी सेकेंड को जिसको हम रिलेट कर रहे हैं, वी ऑलरेडी हैव द टर्म जस्ट नेक्स्ट टू इट. ओके, सो दिस इज द एपोजिटिव नाउन. जिसके लिए सेकेंड बोला उसका नेक्स्ट में आपने वो बता भी दिया क्या है उस चीज़ का नाम. तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ये सेंटेंस ऐसे हो सकता था कि proprietary cities test the lens of people are willing to go. तो ये जो चीज़ है इन्होंने थोड़ी सी ट्रिकी वे में दे दी आपको, है ना. तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना ज़रूरी है कि क्योंकि उसका नाम तो बाजू में ही दिया है, दैट मीन्स इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, it's not about that sequence. So keep that wala idea and that line of
सोल्यूशन सेपरेट। अब आप ये देखोगे कि पहले सिटीज को इंट्रोड्यूस करा है बिकॉज देयर आर इन्वर्टेड कॉमास, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म। वो टर्म का डेफिनेशन फिर बाद में देंगे। सिंस नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ डेवलपर, व्हाट ही इज डूइंग या बाय whom it is done, how he is doing the thing, वो ई में है एंड ए में उसके बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से ये आंसर आएगा। ओके, let me know if you have any other doubt in this question. How many of you want that we continue doing parajumbles in couple of more classes? Okay, okay, fine. So tomorrow, of course, is off, Sunday. Monday onwards, again, we are going to continue at least 3 more classes. This is second part आज जो करा है ना, तो 3 और classes तो करते हैं हम till like Monday, Tuesday, Wednesday till Wednesday. 5 parts हो जाएंगे and then maybe we'll switch to another topic. Grammar correction. Okay, okay, yeah, we can do that as well, है ना? तो वो भी प्लान कर लेते हैं। एरर डिटेक्शन तो आई जस्ट लाइक कैन पिक अप एन आर्टिकल एंड गिव यू सो मेनी क्वेश्चंस आफ्टर दैट। ठीक है, आप लोग इन सारी चीज़ों पर वर्कआउट करो जो जो मैंने आपको बताई हैं, सिखाई हैं, है ना? प्लीज़ डोंट बी डिस्करेज्ड अगर गलत होता है। इट्स ओके, यू आर हियर टू लर्न, so at least learn and keep improving, keep correcting your mistakes every time you are making a mistake. That's how we grow, right? That's how we learn. Also, make sure to like and share and subscribe the channel. Okay, thank you so much. Nicely.